हाय दोस्तों, कैसे हो? होप सब ठीक हो। अम, मुझे और लाइव करने चाहिए एक्चुअली, ताकि मैं आपसे डायरेक्टली भी बात कर सकूं। धीरे धीरे उस सिस्टम को भी मैं रेडी कर रहा हूं। पर आज एक इंटरेस्टिंग सी थॉट है, जो टॉपिक है, जो भी कह लो, जो मेरे मन में हमेशा आता है कि लोग मुश्किल काम क्यों नहीं कर पाते। वाई कांट पीपल डू हार्ड थिंग्स? कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं मुश्किल चीजें, लेकिन मोस्ट पीपल कैन नॉट डू हार्ड थिंग्स। दे फाइंड इट वेरी स्केरी। बहुत उन्हें डर लगता है कोई भी मुश्किल काम में। बहुत उनका अंदर से आवाज आती है कि मत कर, मत कर, मत कर। कोई भी मुश्किल काम करने में लोगों को तकलीफ, मुश्किल क्यों होती है? यू नो, लाइक जरा जरा गहराई में अगर जाया जाए कि भैया, कहता हूँ कि खूब पढ़ ले, फिर उसके बाद तुम्हारा टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो लगता है सर बड़ा मुश्किल है। चलो, मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन फिर मुश्किल काम करते क्यों नहीं लोग? छोड़ क्यों देते हैं लोग? ये कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, नहीं करना है। समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल है पे डिबेट नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। आपको बता दी ये चीज करनी है, आपको पता है ये चीज आपने करी, आपके लिए अच्छी है, लेकिन फिर आप उसे करना छोड़ देते हो। क्यों? और उसका रीजन आप देते हो कि ये बहुत मुश्किल है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? मुश्किल सुनते ही वर्ड हम चीजें छोड़ने का की तरफ क्यों जाते हैं? हम, अगर मुझे कहना है कि अगर आपको, मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी बॉडी बन जाए, लाइक लाइक आई एम गेट रियली रिप्ड, एज दे से, यार एकदम फिट, सिक्स पैक, ये वो। एंड आई नो कि उसके क्या स्टेप्स हैं। आई हैव टू ईट लॉट लेस, हैव टू लाइक लिफ्ट वेट, हैव टू स्लीप, व्हाटएवर। But then I also know कि it's very difficult, and like of course it's very very difficult, but I will then say अरे बहुत मुश्किल है यार, छोड़ देते हैं। जैसे कि you study this, you get into this college, you get into this exam, you'll say बहुत मुश्किल है, छोड़ देते हैं। या anything, like just you have to start your own business, बहुत मुश्किल है, छोड़ देते हैं। So why this attitude towards quitting difficult things? Why we find it difficult to do? Why we find it difficult to do difficult things? It's a very philosophical question, बहुत ही है कि हम, और अगर ये रहे आपकी लाइफ में, तो इससे आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? आप कभी भी देखो, कोई भी बड़ी उपलब्धि, कोई बिग अचीवमेंट, जब एनीबडी हु अचीव समथिंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ मुश्किल काम हमेशा होता है। अगर कोई एवरेस्ट पे झंडा गाड़ता है अपने देश का, तो वो उसने चढ़ाई की है, राइट? उसके पीछे वो कई महीनों से ट्रेनिंग कर रहा था, हो सकता है सालों से ट्रेनिंग कर रहा हो। अगर किसी ने कोई अच्छे आईएएस का या आईआईटी का या अगर एमबीबीएस का टॉप कॉलेज प्राप्त किया है, तो उसका मतलब है कि उसके पीछे उसकी बहुत मुश्किल काम उसने किए हैं, राइट? अगर किसी ने बॉडी बनाई है, तो उसके पीछे बहुत मुश्किल काम उसने किए हैं। कोई भी ऐसी अचीवमेंट बड़ी है नहीं जिसके पीछे मुश्किल काम ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम हम मुश्किल सुनते ही वर्ड, डिफिकल्टी सुनते ही वर्ड भागते हैं उससे। हम कहते हैं हमें ये नहीं करना। वो इसलिए क्यों होता है? बिकॉज़ दिस रियली इज़ अ फंडामेंटल क्वेश्चन, कि अगर अब ये ना हो, देन आई कैन ऑलमोस्ट मेक एनीवन अचीव एनीथिंग। अगर मेरे इस चैनल में एम है लोगों को मोटिवेट करूँ सो दे कैन अचीव मोर इन लाइफ, या आई वांट टू फिक्स दिस वन थिंग, कि जब कोई मुश्किल चीज़ आए तो लोगों को ये ना लगे यार ये बहुत मुश्किल है इसलिए छोड़ दो। इनफैक्ट इफ समहाउ देयर इज़ अ वे कि हम उल्टा सोचने लगे, ये मुश्किल है इसलिए ज़रूर करना, ये मुश्किल है इसलिए ज़रूर करना है। जो इंसान ऐसा, आई डोंट नो ऐसा सोचना पॉसिबल है कि नहीं 100% ऑफ द टाइम, लेकिन जो इंसान ऐसा सोचने लगेगा, दे विल अचीव अ लॉट। व्हाई? बिकॉज़ दे आर सीकिंग डिफिकल्ट थिंग्स। वो मुश्किल चीज़ें करना ढूँढ रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे करें? फर्स्ट थिंग इज़, आई थिंक हार्ड थिंग्स आर हार्ड बिकॉज़ देयर इज़ लिटरली पेन इन देम। Like there is literally some physical or mental pain in them. When you have to sit and study, one whole chapter of a book, unless you're finding that course very, very interesting, which is not always the case for many people, you will find it very hard to keep your mind on that chapter, on that diagram, on that numerical, on that concept, whatever. Your mind will say, Are bas yaar, I want to look outside the window, or I want to look at the phone, or I want to see my notifications. At least thoda sa I want to at least walk around. I want to do something. So it's hard. It's actually mentally straining. Like it requires a lot of strain in your head to say,
I will sit and study. Same way for the gym and going and lifting weights. While everybody will agree, yeah, it's a good thing. It's like hard to go there and stand and lift, and your fingers, everything hurts, and later on your body hurts, and you're like, yeah, fine. It's hard. It's just too difficult. So there is physical pain in the actually exercise. So you don't want to do it. In climbing the Everest, is physical pain at the same time. You don't want to do it. So these physically hard things, these mentally hard things actually cause some pain. There is some nerve endings. There is something in the brain, some neurochemical that is released that tells you to stop doing it, right? Why? Because pain means what? Avoid this. Pain typically means it's a way of body to tell you it's too hot, it's hurting, remove your hand, right? Normally it's meant for that. But if the pain signals are coming from certain activities like studying or working out or working on your business or like focusing on work, then it's a bad thing, because that's your body signaling you to stop doing something which is good for you, and that's not good, right? So that first thing is to realize कि यार ये गलत है. जब मैं कोई अच्छी चीज कर रहा हूँ, जो चीज मेरे लिए अच्छी है, उसमें मेरी बॉडी मेरे को दर्द क्यों दे रही है? दर्द नहीं होना चाहिए, तकलीफ क्यों दे रही है? मुझे तकलीफ इससे नहीं होनी चाहिए. एंड व्हाट यू डू देन इज, आपका अगर इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स इज टू बी डिस्ट्रैक्टिव, इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स इज टू ईट द जंक फूड, गंद खाओ, अच्छा खाने का नहीं है, देन यू इंस्टिंक्टिव इज बेसिकली योर बैक ब्रेन, योर पीछे वाला दिमाग जो एनिमल ब्रेन है, वो कह रहा है कि just eat fat and just eat sugar and just sleep, and just watch TV and scroll the internet, scroll Insta reels, whatever. That is the basic brain, the primitive brain doing. But you have what only human beings have, is a very evolved frontal brain. And this brain is the brain that is listening to this YouTube, that is listening to this conversation and understanding, no, some hard things, some difficult things are actually good for me, and those things should not give me pain. Now you keep on reasoning that with yourself, and slowly you will find that there is an override. The front brain will win over the primitive brain, and it will say, okay, no, no, gym jana chahiye yaar, it's okay. I know it hurts, but it's a good hurt, it's okay. I know it's effort, it's good effort. I know padhna chahiye, but I know it's, agar main aaj padhunga to one day I'll get into a good college. That's your front brain winning over the primitive brain. So first is you retrain your brain like that, right? And that's very important, because the primitive brain is actually very strong impulse in us. Most of marketing, most of content, most of everything, everybody tries to attack your primitive brain, right? These my videos get very, if you listen to them, I get a lot of praise. If you notice the comments on the videos, especially guys, if you've been watching my videos, do tell in the comments below if you like them or not, and what difference have they made into your life. But to listen to them, you have to pretty much use your front brain, because if it's not so much the primitive brain video, but if I made a video, अगर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं, मैं चल रहा हूं और मैं केले के छिलके पे फिसल जाऊं और गिर जाऊं और टॉय की आवाज आ जाए पीछे से, उसमें आपका फ्रंट ब्रेन नहीं लगेगा, वो आपके पीछे वाला ब्रेन ही देख लेगा, वो बोलेगा अरे कुछ सिली सी चीज हुई, हाँ हाँ हाँ, हंसो हंसो. And that will get a lot of views also, because most people in this world don't want to use their front brain. It is effort, they take some effort to do it, and they don't want it to use it at all. But then you are only using your animal brain, so your life is not going to be very good. You're going to be a little bit live better than animals, but basically you are like animals. You are like attracted to food and sex and just anything that can trigger your primitive brain. So you have to say, I have to use my front brain. And if you are a viewer of this channel, mera channel agar aap dekhte ho, तो that means you are someone. Because why would you be watching this video? This is just a guy talking, right? So that means you do like to use your front brain. So train your front brain. The primitive brain will avoid, it's giving me the wrong signal. Sometimes I'm doing things which are good for me, but the primitive brain is telling me not to do that. Pehli baat ye. Second thing, tolerance of this pain. Tolerance of this pain is like a muscle. When you do something difficult, you can do it, that means you can survive that pain. Next time your mind and body are trained better. I mean, gym is the most common example. If you keep on lifting 10 kilo dumbbells, then one day you can lift 12 and then 14, and it becomes a little easier, to do it over time, the same weight.
then you can, what they call progressive overload, you can keep adding more and more weight to your thing, because the same muscle can, which was 10 was very difficult one day, 10 becomes very easy one day, right? Same for mentally. If you are used to studying, you know, you can study 3 hours, you can then one day 3 hours will be difficult, one day it will become easy, then you can study 4 hours, then you can study 5 hours. So you must practice doing difficult things. For that, you have to seek out difficult things. Like I said, don't say avoid difficult things, you have to seek out difficult things. Fundamentally life यही है. People who look for difficult things to do that are good for them, and people who can keep on doing those difficult things eventually get success in life, and a lot of success in life. So it's up to you really guys, it's up to you. आपके ऊपर है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फंडा कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, आपको तकलीफ सहने की आदत होनी चाहिए, वो वाली तकलीफें जो आपके लिए अच्छी हैं. तकलीफ सहने का मतलब ये नहीं कि ऐसे जबरदस्ती अपने आप को कील चुभोते रहो, ये दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट विल नॉट लीड यू एनीवेयर, दैट्स बैड फॉर यू. But if it's studying hard instead of watching the phone is causing you pain, but it's a good pain, yeah, one day it will lead to results. Working on your body in the gym, resisting eating junk food and controlling your diet, difficult, but if you can do it, well, you see yourself in the mirror in a few months, you will see a difference. So ये चीजें कोई भी कर सकता है, मुश्किल चीजें, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए. इट्स जस्ट दिस रियलाइजेशन विच यू हैव गॉट होपफुली टुडे by watching this video ki, okay, am I avoiding difficult things, and are some difficult things not to be avoided, and are some difficult things to be sought after. मतलब you have to seek difficult things, you have to find डिफिकल्ट थिंग्स. अपनी मुश्किल चीजें ढूंढो लाइफ में करने के लिए. अगर आपकी लाइफ में 2-3 चीजें हैं क्या जो मुश्किल है करना, लेकिन आप करते हो, करो. Like for me it could be like writing a book. It's hard, it doesn't get easier after so many years also. Writing one page after the other for a year, doing one book after the, it's hard, but I do it. I write scripts, making videos non-stop is hard. It's not just always fun. I do enjoy them, but I know it requires focus. So I know, but that I'm doing several hard things in a day, going to the gym, whatever, that means life में कुछ अच्छा ही होगा आगे चल के, and that's what happens. Same for you. So don't be afraid of doing difficult things. Don't be like other people who find it difficult to do difficult things. And if at all, seek difficult things. मुश्किल चीजें ढूंढो जो आपके लिए अच्छी हैं. Thank you for watching this video. Like, subscribe. I know. जब मैं ये बोलना शुरू करता हूँ लोग कहता है चल चल अगले वीडियो पे. ऐसे मत करो. You watched it, absorb what I just said, and yeah, promote this video to other people so other people can benefit. My kind of videos need that promotion because it doesn't have that primitive brain, people slipping and falling kind of videos. So yes, do like, subscribe, share, and comment. Thank you for watching. Take care.